हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जॉब एंड बैच कोस्टिंग सॉल्यूशन। ये जो क्वेश्चन है वो सौराष्ट्र यूनिवर्सिटी एग्जाम में मार्च 2018 में पूछा गया है। तो फ्रेंड्स, फर्स्ट यू पॉज दिस वीडियो एंड रीड दिस क्वेश्चन। द क्वेश्चन इज डिवाइडेड इन टू पार्ट्स। आफ्टर दैट वी विल डिस्कस। So I hope friends you have read this question. So in this question information is given about Sita Limited. Now this company undertakes a contract to supply 1000 units of a component per month, okay, for the months of January, February and March. इन सिंपल वर्ड्स, यहाँ एक कंपनी 3 महीने के लिए कॉन्ट्रैक्ट साइन करती है जिसमें हर महीने कंपनी 1000 यूनिट्स एक कंपोनेंट के भेजेगी। एवरी मंथ बेच ऑर्डर इज ओपन अगेंस्ट विच मटेरियल and labor cost are booked at actuals. Overheads are levied at a rate per labor hour rate. This point is important here. यहाँ जो overheads है वो labor आवर रेट के हिसाब से गिने जाते हैं। द सेलिंग प्राइस इज कॉन्ट्रैक्टेड एट ₹15 per unit. This information is also important here. Selling price per unit for the component is 15 rupees. Okay, from the following data present the cost and profit per unit of each batch order and overall position of the order for the 3000 units. तो फ्रेंड्स, हमें ये जो डेटा दिया गया है उसके ऊपर से 3000 यूनिट्स के लिए हमें ओवरऑल पोजीशन जो है बेच की वो क्लियर करनी है। इट मीन्स वी आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द कॉस्ट एंड प्रॉफिट पर यूनिट फॉर एंटायर बेच एंड दिस 3000 यूनिट्स। सो देखते हैं क्या इंफॉर्मेशन यहाँ दी गई है। तो फॉर दिस 3 मंथ्स बेच आउटपुट इन नंबर्स इज गिवन। इट मीन्स जो प्रोडक्शन है तीनों महीने का, जनवरी, फरवरी और मार्च, तीनों का प्रोडक्शन हमें दिया है यूनिट्स में। आफ्टर दैट मटेरियल कॉस्ट इज गिवन इन रुपी एंड लेबर कॉस्ट इज गिवन इन रुपी फॉर ऑल दिस 3 मंथ्स। इसके बाद हमें कहा है कि लेबर इज पेड एट द रेट ऑफ ₹2 पर आवर, यानी जो लेबर आवर रेट है पर आवर वो हमें दे दिया है, दैट इज ₹2 पर आवर। and other details are again for 3 months details of overheads is available, तीनों महीने का overheads है, as well as total labor hours are given. These overheads are in rupee and this information is in hours. तीनों महीने के labor hours है हमारे पास। तो चलिए फ्रेंड्स, we are trying to calculate the answer of this question. Okay, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल स्टार्ट विद द कैलकुलेशन ऑफ लेबर आवर्स। व्हाट इट मीन्स, तो हमारे पास यहाँ तीनों महीने की जो बेच है उसका टोटल लेबर है, मगर टोटल नंबर ऑफ आवर्स फॉर ईच मंथ आर नॉट अवेलेबल। सो इट्स वेरी सिंपल, टोटल लेबर एक्सपेंस विल डिवाइड बाय लेबर रेट पर आवर। Okay, for the month of January total labor amount is 2500 and rate per hour is same in all these three batches. So 2500 divided by 2. So for the month of January we will receive 1250 labor hours. For the month of February total labor expense 3000 divided by 2. So 1500 hours for the month of February, and for the month of March 2000 divided by 2. So 1000 hours. तो इस तरह हमें तीनों महीने के जो ऑर्डर्स प्रोडक्शन है उसकी लेबर आवर्स कैलकुलेट की है। Okay friends, after that we will try to calculate overhead rate. Here overhead rate total is available for us in amount, okay, as well as total labor hours for each month is also available. So simply we can calculate total overhead rate like this: total overhead amount divided by total labor hours. For the month of January total overhead is 12,000 rupee for 4000 hours. So by dividing it we will receive ₹3 per hour, that is overhead rate for the month of January. For the month of February
9,000 रुपीज इज द टोटल ओवरहेड, हम उससे डिवाइड करेंगे 4,500 लेबर आवर्स जो कि फेब्रुआरी के हैं, तो विल रिसीव ₹2 पर लेबर आवर रेट. For the month of March, 15,000 rupees total overhead. We will divide with 5,000 labor hours of March month. So we will receive ₹3 per labor hour rate for overheads. ओके फ्रेंड्स, तो हमें ओवरहेड्स के लिए पर बेच का हमें रेट मिल गया है पर लेबर आवर. नाउ वी विल अप्लाई टू अवर जॉब. तो इस प्रकार से हम अप्लाई करेंगे फॉर्मूला. तो लेबर आवर पर बेच मल्टीप्लाई विद लेबर overhead rate per hour. Okay, so we are starting with January month. So in January month the required number of hours, जैसा कि हमने ढूंढा है पहले, तो required number of hours are 1250 multiply with 3 rupee labor hour rate of January. So total overheads in the month of January are 3750. Same way in the month of February, 1500 labor hours multiply with overhead rate of February 2 rupee. So total 3000 overhead amount for the month of February. And in the month of March, total number of labor hours are 1000 multiply with overhead rate per hour of March is 3 rupee. So total 3000 rupees. Okay, so this way we have calculated the total overhead for each batch of January, February and March. Okay friends, now we are going for the main answer, that is the statement showing profit per unit for every batch. So here first column shows the particulars, then I have written information of all these three batches divided in 3 months, January, February and March. तो सबसे पहले वी विल स्टार्ट विद द मटेरियल. तो तीनों महीने तीनों बेच का जो मटेरियल है मंथ वाइज डिवाइडेड आई हैव रिटन हियर, इट इज ऑलरेडी अवेलेबल इन द क्वेश्चन. सेम वे हमने लेबर भी यहाँ लिख दिया है. नाउ टोटल ऑफ दिस मटेरियल एंड लेबर वी विल रिसीव प्राइम कॉस्ट. हमें प्राइम कॉस्ट मिलेगी, दैट इज 8750, 12,000 एंड 7,000 रिस्पेक्टिवली. नाउ वी विल ऐड ओवरहेड टू इट, जैसे कि हमने ओवरहेड अभी कैलकुलेट किए हैं. तो वी विल ऐड हियर ओवरहेड्स फॉर जनवरी 3750, February 3000 and March also 3000. So now we have received here total cost, that is for January 12,500, for February 15,000 and March rupees 10,000. Okay, now as this is the total cost, we want cost per unit. तो अगर हमें cost per unit चाहिए तो total cost we will divide by number of units of production. So here we will write number of units of production. So for the month of January 1250, in the month of February 1500 units and in the month of March 1000 units. तो अब हम टोटल कोस्ट को ये यूनिट से डिवाइड करेंगे, देन वी विल रिसीव कोस्ट पर यूनिट विच इज सेम इन एवरी बैच और सेम इन एवरी मंथ. वी कैन से दैट इज 10 rupee. Okay, now in the question selling price per unit is already available. Selling price for this component is 15 rupees, that is already available. So by deducting this cost per unit from selling price we will receive profit per unit. तो यहाँ प्रॉफिट पर यूनिट सेम रहेगा तीनों महीने में या तीनों बेच में, दैट इज 5 rupee पर यूनिट. इफ वी वांट टू कैलकुलेट टोटल प्रॉफिट तो सिंपल है, ये जो प्रॉफिट पर यूनिट है उसे हम डिवाइड करेंगे नंबर ऑफ यूनिट से. तो फॉर द मंथ ऑफ जनवरी द टोटल प्रॉफिट विल रिसीव इज 6250. In the month of February total profit we will receive is 7,500 and in the month of March total profit we will receive is rupees 5,000. Okay friends, the last point, it is asked to calculate the profit for 3000 units. So it's very easy. First of all we will calculate the selling price. So here selling price is 15 rupee.
per unit. So 3000 units into 15 rupees, so 45,000 total selling price. Now we are going to deduct total cost. So total cost per unit is 10 rupees. So 3000 units into 10 rupee, that's why 30,000 total. So we will deduct 30,000 from 45,000. So profit is 15,000 rupees for the unit, for the बैच साइज ऑफ 3000 यूनिट्स. या तो हम सिंपली ऐसे भी कर सकते हैं, वी ऑलरेडी हैव प्रॉफिट पर यूनिट, सो 3000 यूनिट्स मल्टीप्लाई विथ प्रॉफिट पर यूनिट ऑफ 5 rupees. This way also directly we will receive answer, that is rupees 15,000 profit for 3000 units.